Traversing through the northeastern part of the Indian state of Himachal Pradesh, the lush green scenery slowly transforms into a barren landscape. Entering the high-altitude desert of Spiti via road is a spellbinding experience, but often billed as the world's most treacherous route. Even as the vegetation gets sparse and the mountains turn brown, the emerald green waters of Spiti flow like an ornament along the road. Locally called Piti, the villages in the area experience long and freezing winters followed by short and arid summers. ठंड तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ ना, -30, 35, 40 तक पहुँच जाते कई बार। तो एक मंजिल मतलब लगभग बराबर हो जाता है बर्फ़ ना, स्टॉक करते करते 6-7 फीट तक हो जाता है। आम जनता सर्दियों में तो बस घरों में बैठे रहते हैं। अगर बर्फ़ गिर जाए तो वही काम होता है कि बर्फ़ हटाना होता है, फिर पानी भरना, खाना बनाना, गाय पशु वगैरह उनको चारा वगैरह डालना, पानी देना। 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना बस आराम करने का होता है यहाँ तो। For over 3 decades, Rastan Bodh has lived in the town of Kaza, the headquarters of Spiti Valley, where he offers a unique homestay experience for the tourist. He fondly remembers the humble beginnings of his business experiment that has now become his main source of income. ये पहले तो अपने रहने के लिए बनाया था मकान, फिर आज से कोई 10-12 साल पहले थोड़ा फॉरेनर्स वगैरह एक ज़्यादा तो नहीं कम आते थे उस वक्त, तो मैंने सोचा कि चलो चला लेते हैं, देखते हैं। उस वक्त ऐसा कुछ टॉयलेट बाथरूम कुछ ऐसा था ही नहीं, टेम्परेरी मतलब। तो 70 रुपये से मैंने शुरू किया था, रूम को चढ़ाया था 70 रुपये में पहली बार। तो उस वक्त बहुत खुश थे कि एक रूम में 70 रुपये मिल रहा है। उस वक्त 70 रुपये का वैल्यू कुछ और था, आज के रेट में तो कुछ नहीं। 15 kilometers away from Kaza lies one of India's most iconic Buddhist monasteries. Sitting atop a hill at about 4,000 meters above the sea level, the key monastery is the biggest center of Buddhist learning in Spiti Valley. The monks here carry on with their daily routine despite the freezing temperatures. यहाँ पे ठंड पे एक ऐसा है कि ठंड पे यहाँ पे लोगों को आदत जैसी हो गई ना, कि बचपन से यहीं रह रहे हैं हम लोग, तो एक आदत जैसी हो गई। मतलब ज़्यादा गर्म कपड़े तो ओढ़ते तो है, फिर भी एक आदत हो गई, ज़्यादा ठंड लगते नहीं है यहाँ पे। Life can be a struggle in these isolated landscapes cut off by snow-capped peaks. The elements of nature take a toll, and in sub-zero temperatures, without any modern means of heating, people have to seek warmth from nature itself. धूप जैसे धूप निकलेगा तब बाहर निकलता है, बर्फ पड़ेगा कमरे में रहते हैं। यहाँ जारी होता है, फिर गोबर होता है पशुओं का, थोड़ा बहुत फिर फॉरेस्ट वालों का टिप्पू वहाँ से लकड़ी देते हैं। Some winters are harsher than others, and sharing Tashi remembers one such. खाना पीने का हवा से रुक भी जाता है, कोई पानी पीने के लिए कभी बर्फ ज़्यादा हुआ तो फिर बर्फ पे पिघल भी आग में पानी पीते हैं। Surviving the cold of this region isn't a small feat, but these picturesque hamlets and ancient monasteries help turn the cold desert of Spiti into a surreal sight, seldom seen in other parts of the Indian Himalayan region.